Hello and welcome to Open Format's brand new episode. Well, in this episode, I'll continue to talk about the caste census as I started in my previous episode. We know for the fact only one state has conducted caste census of its residents across the territory, state of Bihar. Ever since then, there has been a clamor to conduct a caste census across the country by the opposition. On the other hand, government says, well, we have to go slightly carefully with the concept of caste census. Now, that is for the political debate. The purpose of this podcast is not to enter the political debate, as I said last time as well. It's for the government of the day and the opposition of the day to decide, to ideate, and of course to deliberate how to go about this potentially hot political topic. Here, we'll talk about more from the point of view of the history and the academics of caste. What is caste and what is the caste census? Well, the last census across the country, the population census, was conducted in 2011. It didn't have figures, or for that matter, the figures that were made out public does not talk about the stratification, does not talk about the percentage of caste groups. It talks about the broader figures. The last caste census across the country was conducted in 1931, and the figures were quite interesting. For those who have been privy to 1931 caste census figures, it's really interesting to look at the last of the annexures where they talk about the castes per se across the provinces of British India. In that particular columns, you'll find one dedicated to the exterior caste. Now, exterior caste later on becomes a larger ambit of the scheduled caste. Now, interestingly, these exterior castes are the ones which were defined by the conductors of those census in British India as the depressed classes, as the caste which were outside the pale of societal system. Now, we have to understand societal system. Kya hai societal system of when you talk about the caste? Well, for the apologist of caste system, they would say, we don't ascribe to the caste system because the word caste itself is not a Hindi word, is not an Indian word for that matter. ये शब्द जो है अंग्रेजों द्वारा लाया गया है, agreed, but they cannot hide the fact, the stratification of society in terms of Varna and Jaati. Varna क्या है? If we look at the historicity of the term Varna, so we had four Varnas, and outside the pale of Varna, there was another strata, which were the untouchables. Now, those are the ones loosely categorized as the exterior caste in 1931 caste census. Looking at the Bihar's picture, we could say the number of these depressed classes, the number of classes of the caste which do not have access to resources, adequate access to resources, adequate access to the opportunities, and they still remain outside the pale of larger social net. They are the ones which contribute the majority of the state. Now, as per the Bihar census, there are ABCs, OBCs, scheduled caste, scheduled tribe, and of course, then you have the other caste which are there in the societal order. The other caste in societal order certainly are barely 10 to 11%, whereas the EBCs, the OBC and the scheduled caste happens to be nearly 70%. इसी से हमारी जो है पूरी की पूरी एक डिबेट स्टार्ट हुआ इन द पॉलिटिकल सर्कल टू हैव अ कास्ट सेंसस. वी नीड टू अंडरस्टैंड how many of the classes, what communities, what social groups happens to be outside the pale of access to opportunity, resources and equality. उनके लिए हम कैसे प्रोग्राम बनाएं? That is the argument put forth by those who want to conduct, or rather for that matter, who are favoring caste census to be conducted across the country. Going forward, two other states ruled by the opposition have announced caste census, that they will be conducting a caste census, state of Karnataka and the state of Telangana. The center, on their behalf, they have said in next year, by 2025, they will have a census across the country. How far it will go into the caste census, that is for us to wait and see what happens in the 2025 census.
Now, coming back to caste census and why it's important to have an understanding of that, whether you favor it or you stay against it, but it's really important to have understanding of the caste census. क्या है caste census? Caste census simply put means कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें कितनी परसेंटेज कौन सी कास्ट है. कास्ट क्या है? नाउ इफ यू ब्रेक डाउन द टर्म, agreeable, the term is imported word which was made the part of the English lexicon during the British Raj. Prior to that, we had the terms like Varna and Jaati. As I said, चार वर्ण, उसके अलावा जो बाहर हैं, they were simply referred to as untouchables by those who practice the caste discrimination. Caste discrimination still happens. You cannot deny that. There are certain rules of mobility which is based on the historicity of the caste system. The ones which happens to be at the lower end, जो हमारे outside the pale of the वर्ण system, जो कि untouchables कहे गए हैं उस caste system द्वारा, उनका जो है mobility restricted है. और ऐसे ही जो वर्ण है, जो चार वर्ण है, 1, 2, 3, 4, उसकी भी जो एक सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, उसकी भी मोबिलिटी, द सोशल मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड. Well, number 2 cannot become number 1, number 3 cannot become number 2, and number 4 is totally immovable. They have to stay there because there are certain duties, there are certain functions which are ascribed to that last one. Talking about jatis, jatis simply mean आपका बर्थ किस जाति में होता है, आपका बर्थ किस ऑक्यूपेशन में होता है. सो बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, सेवरल जातीज आर नेम्ड. लॉट ऑफ देम आर onomatopoeic, लॉट ऑफ देम आर एपोनिमस. सो ऐसे ही जिनके जो ऑक्यूपेशन उनको दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि कास्ट ऑर्डर द्वारा जो है एक थोपा गया है कि आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, आप इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, उसके हिसाब से कई कास्ट डिफाइन हुई हैं हिस्टोरिकली. We're living in 21st century and we have seen at least some progress with the constitutional net of reservation. रिजर्वेशन की मदद से काफ़ी डिप्रेस्ड क्लासेस जो रही हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड कास्ट रही हैं, जो कि दे हैव बीन आउटसाइड द पेल ऑफ आवर सोशल सिस्टम, उनको मदद मिली है टू हैव access to resources, to have access to opportunity, and also to press for access to equality. It's a long process. उसके बाद हम कह सकते हैं कि कास्ट ऑर्डर या कास्ट सिस्टम जब तक इरेडिकेट नहीं होता, तब तक वी कैन नॉट रियली से कि आपका कास्ट में जो विश्वास है लोगों का, जो एक तरह से इम्पोजिशन है, वो खत्म हो गया है. नाउ सिंपली पुट, कास्ट सेंसस क्या कर सकता है? कास्ट सेंसस आपको एक फिगर देगा कि इस देश में फलानी जाति इतनी परसेंट है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, उनकी मोबिलिटी पिछले टाइम से, या कह सकते हैं कि पिछले कई दशकों से क्या रही है, उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, डू दे हैव एक्सेस टू बेसिक सिविक ह्यूमैनिटीज, उनका सालाना इनकम क्या है, व्हाट इज देयर एनुअल इनकम, फॉर दैट मैटर इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन, उनका मंथली इनकम या डेली इनकम क्या रहता है, इज इट इनफ फॉर देम टू सस्टेन एंड सर्वाइव. ये सब फिगर्स जो हैं, इकोनॉमिक डेटा, सोशल डेटा, ये हमें कास्ट सेंसस से मिल सकता है, जिसके बाद फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे it can help them to have affirmative action policies to help these groups. We cannot deny in a country where 85 crore people are living on the government ration, 85 करोड़ लोग को राशन मिलता है, वहाँ पर जो उनकी माली हालत है, जो उनकी इकोनॉमिक हालत है, वो ठीक है. हम नहीं कह सकते इस बात को. It will be very unwise to even think that they are economically self-sufficient. They are not. बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है to have action, to have affirmative action so as to support those groups. इसीलिए कास्ट सेंसस का जो फेवर करते हैं, उनका एक आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि इससे जो है हमें ये जानने को मिलेगा कि कितनी जो है आपकी जो क्लासेस हैं, जो कितने आपकी जो कास्ट हैं, जो आउटसाइड सोशल पेल हैं, उनको इससे मदद मिल सकती है.
Again, I would say to understand the caste system, you really have to understand history of migration in this country. कई ethnic groups जो हैं यहाँ पर आए, उसके बाद they established their own clans. Some of the clans became the ruling clans, और उसके बाद जो है we are seeing that those ruling clans are still having an advantageous position in society. इट्स नॉट अबाउट कुछ चेंज नहीं हुआ है, चेंज डेफिनेटली हुआ है, सोशल अवेकनिंग हुई है, स्पेशली विद आवर फाउंडिंग फादर्स स्ट्रेस ऑन affirmative action, on social equality, on the constitutional sanctity. इसके बाद कई कदम उठाए गए हैं, but still lot needs to be done. In my previous podcast, I talked about the concept of lactose intolerance and lactose persistence, which is dependent on our genetic makeup. Now, deconstructing it further, scientifically, we get to know that a migration pattern has a lot to do with being lactose intolerant or lactose persistent. There is a mix of population which do not have genetic mutation of 13910T in the DNA, and they happens to be lactose intolerant. Simply put, there was a migration from Central Asian steppes. Same group went towards Europe, and the same group came here. Now, if you look at the genetic mutation, इनको हम अगर इनका जो जेनेटिक मूवमेंट की स्टडी करें तो ये पता लगता है कि जो ग्रुप सेंट्रल एशियन स्टेप से यहाँ पे आया था, उनके ही जो बाद में जो क्लान बना और उनके बाद ही जो है जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो उनका एक फैमिली ट्री है, उसमें उनमें दूध पचाने की क्षमता है। वो वही ग्रुप है, वही क्लान है जो कि एक ज़माने में सेंट्रल एशियन स्टेप से यूरोप की तरफ माइग्रेट कर गया था। सो क्लियरली हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से एक माइग्रेशन पैटर्न ने इस प्रॉपर्टी को आपके शरीर में डाला कि क्या आप दूध पचा सकते हैं या नहीं पचा सकते। नाउ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी विल सी कि नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो लैक्टोस इंटॉलरेंस है वो कम है। दैट मीन्स दे आर मोर लैक्टोस परसिस्टेंट, वो दूध पचाने की क्षमता रखते हैं। वेयर साउथ और ईस्टर्न बेल्ट में जो है लैक्टोस इंटॉलरेंस ज़्यादा है। ये कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है, बिकॉज एज वी हैव सीन देयर हैज बीन लॉट ऑफ माइग्रेशंस, देयर हैज बीन लॉट ऑफ इंटरमिंगलिंग एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डीएनए म्यूटेशंस। उससे जो है ये प्रॉपर्टीज आई हैं। लेकिन ये बात साफ है कि जो माइग्रेशन हुआ है अर्ली एंशिएंट टाइम्स में, दैट इज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर इन लॉट ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, लॉट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। वहीं से हमारा जो है एक तरीके से कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी हो जाता है, जिसमें कि जो लोअर ऑर्डर है, जो वर्ल्ड में चौथी स्तंभ पे है, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। सिमिलरली जो आउटसाइड पेल है उसको कई चीज़ों के अधिकार नहीं हैं। दे कैन ओनली स्टिक टू सर्टेन ऑक्यूपेशन विच हैज बीन ascribed टू देम एज पर द सिस्टम डिराइव्ड इन दोज अर्ली टाइम्स। इसको तोड़ने के लिए there is a requirement of affirmative action, but more than that we need to have awareness। और ये awareness कैसे आएगी? Unless we get to know about the caste order and the origin of caste. Well, that's it in this episode. Going forward, we'll talk about caste origin and caste census. One may be having a certain opinion about caste census, but it's really important for them to know. Only after that, once we know something, I feel we can make an informed choices. Well, keep watching this podcast, this space for more such debate. And lastly, I'd request you to please keep giving me feedback, and also I'd be willing to field any question on this subject of caste census. That way, even I'll be able to educate myself better. Thank you for watching this episode. See you soon. Goodbye.